we lose a civilian life, innocent life. I mean, it is monstrous to say that, those the perpetuators of this violence are the monstrous. And everyone is showing his or her sympathy with those families, because they are also the part of our country. They are also this country is our family, and we lost unfortunately some family members in those terrorist attacks. मुल्क के अंदर इस साल ऐसे साने पेश आए जिन्होंने हिंदुस्तान के लोगों को खून के आंसू रोने पे मजबूर किया। पहलगाम अटैक से लेके दिल्ली ब्लास्ट और दिल्ली ब्लास्ट से लेके श्रीनगर में जो चंद दिन पहले ब्लास्ट हुआ, कई इंसानी जानी चली गई। और अब लोग परेशान और दुख में नजर आ रहे हैं। दुख क्यों ना हो, किसी घर का एक फैमिली मेंबर अपनी फैमिली को चलाने के लिए घर से निकला था और उनकी फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता कि आपका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अब तक जितने भी बड़े अटैक हुए उनकी डिटेल कश्मीर के साथ जुड़ी हुई थी। हम इस वक्त कश्मीर यूनिवर्सिटी में आए हैं। हम कोशिश करेंगे यहाँ पे स्कॉलर्स से बात करने की, जो अलग अलग रियासतों में या स्टेट के अंदर हमने देखा इस साल अटैक हुए, ये इन अटैकों को किस तरह से देख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे स्कॉलर्स से बात करने की, वो इस सब को किस तरह से देखते हैं। इंसानी जान, wherever we lose a civilian life, innocent life. I mean, it is monstrous to say that, those the perpetuators of this violence are the monstrous. I mean, we really condemn it, and I have no words. I'm at the loss of words to even explain my anguish over this. Before this, we had seen the Pahalgam attack. We see the 26 civilians were killed, and now we see the suicide bomber who allegedly is from Kashmir and is a doctor. I mean, I am at the loss of words that a person having such a prolific career and was as we heard in the news was a doctor. I mean, and then he had secured rank, was a rank holder, and what we heard from the news, I mean, I cannot imagine such person having a prolific career. I mean, ending up blowing himself into the pieces and killing the innocent people as well. I mean, this is condemnable. I mean, there are no words. I can only have sympathy with the innocent people who have just lost their lives. Either it is in Delhi or it's in Naugam, where our police personnel lost their lives. यह न्यू जनरेशन की बात ही नहीं, हर एक इंसान, जब भी किसी की इंसान की जान चली जाती है दुनिया के किसी भी कोने में, तो इंसान दुखी हो जाता है, इंसान को अफसोस हो जाता है। चाहे वो पहलगाम हो या रिसेंटली जो हमारी कैपिटल दिल्ली में हुआ, जिस अटैक में 13 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड सम पीपल गॉट इंजर्ड, जो कि इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। एवरीवन इज कंडमिंग इट एंड एवरीवन शुड कंडम इट। और चाहे वो कहीं पर भी हो, किसी की भी जान चली जाए, इंसान आखिर इंसान होता है, इंसानी जान कीमती है, और इंसान की जान की जो जान है इसकी एक हिफाजत होनी चाहिए। हमारे साथ ये होता है कि अगर कोई इसको ग्लोरीफाई करने की कोशिश करेगा, जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा, इट इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। उनको भी कंडम करना चाहिए। जहाँ कहीं भी दुनिया में दहशतगर्दाना हमला हो, इस पर हमें वी शुड कम यूनाइटली अगेंस्ट टू दीज टेररिस्ट्स, एंड वी शुड टेक ए स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट एवरी person who try to create that kind of problem in our society, who try to separate that kind of terrorism in our society, and we should come unitedly and fight with that problem. It is the parasite for our society. मैं जब पैदा हुआ था, मैं 90s के बाद 95 में अराउंड पैदा हुआ था, तब militancy was at its peak. So although I do not know how it would have been, लेकिन but what we see is that we in 90s we lost one generation. एक generation तो हमने गोलियों से हमारी ख़त्म हो गई। दूसरी generation अब आई थी, वो तो हमारे stone pelting में वो incidents हो गए, lot of killings, 200 people. Every uprising year there would be 200 killings. अब now we had seen that हम उससे उबर ही रहे थे कि drugs का यहाँ पे start हुआ, और we are losing one generation completely to drugs. And now this, मेरी यही है कि मतलब I mean हमें we should really
contemplate about this, where we are going, as Kashmiri people, where we are going as humans, और हमारी क्या जिम्मेदारियां बनती है और हम क्या कर रहे हैं. I mean, rather than that कि हम परस्यू करते अपना करियर, हम प्रोलिफिक करियर, हम अपना करियर बनाते, दुनिया में नाम बनाते, हम ऐसी एक्टिविटीज़ में हमारे कुछ मुलविस है और उससे सबको पेंट किया जाता है, टार्निश किया जाता है. यू वुड हैव सीन इन नेशनल मीडिया टू that one person who was found guilty, and now the repercussions and ramifications are so wide that there are 300 million people, Muslims mostly, and who are being doubted now, who are looked suspiciously now. And this has happened to Kashmiris. We see that there is crackdown on Kashmiri students living outside. Now everybody is looked through the lens of suspicion, which is wrong. I mean, our policymakers, they should introspect, and they should see what really has happened, what really has gone wrong, and then they should introspect also this, that how do we stop such incidents. This is the message that policymakers should look into this. The government, the present government, the agencies, they should have to introspect in this, and they should not hurt anybody, any innocent, to control their radicalization. And mostly I'd say that it should not result in the suppression of people who are innocent. I'm sorry to say that we all try and put our religion in our sleeves. We should not see things all the time as through the perspective of religion. First, you should be human being. When you will be a good human being, then you will be the follower of any religion, whether it is Islam, whether it is Hinduism, whether it is Sikhism, whether it is Christianity. Before following a religion, first of all, it is compulsory for you. You should be a good human being. और जहाँ पर हमें हर एक एंगल को देखना चाहिए फ्रॉम द ह्यूमैनिटेरियन बेसिस. अगर कोई मर रहा है, किसी की जान चली गई है, उसको हमें इंसानियत की नज़र से देखना है. वी शुड नॉट डिवाइड पीपल ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ सेक्ट, ऑन द बेस ऑफ कास्ट. वी शुड सी, अगर कोई मरा, whatever he is from a Hindu religion, he is from a Sikh community, he is from a Muslim religion, क्या हुआ? अगर हम इसको हम पर्टिकुलराइज करेंगे, टेक माई एग्जाम्पल, आई एम मुस्लिम, कोई मुस्लिम मरा, मुझे उसके लिए सिंपैथी आएगी? नो. दुनिया में कोई भी मरेगा, मुझे उसके साथ सिंपैथी होनी चाहिए. If terrorism has a religion, it should, because terrorist belongs to a certain religion, so it is only there to target one religion. No, I mean, its effects are seen throughout. तो आप इसको इस लेंस से मत देखिए कि ये मजहब से था ये लड़का, तो टेररिज्म आप बोलोगे कि ये इस्लामिक टेररिज्म था. दिस इज नॉट सो. बट like we have been the victims of terrorism, we ourselves. Show me there are countless families. There would be no family in Kashmir that has not been the direct or the indirect victim of the terrorism. So we have seen it, and Kashmiri people, mostly youngsters, should stand tall, and they should say not in their name, and then terrorism, they should say no to terrorism and not in their name, and they should tell the world that we are the peace ambassadors of peace, and we want to spread love and not hate and not terrorism. And most of us Kashmiri people, you see there are the examples. I'll tell you, there are a lot of examples. You see Kashmiri people are shining throughout the world, and now the one incident happens that all the fingers are pointed out. Just he is a Kashmiri, he is a Muslim, he is a fundamentalist and the terrorism, and that should not happen. We all are the proud Indians. अब देखिए, you can go throughout the campus of this university. Everyone is showing his stand with those families who's lost their precious lives in these heinous attacks, and everyone is showing his or her sympathy with those families, because they are also the part of our country. They are also this country is our family, and we lost unfortunately some family members in those terrorist attacks. And कितना भी उनको हम मुआवजा दें, लेकिन उनकी जान की भरपाई हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारी सिंपैथी हमेशा उनके साथ है. वी विल बी ऑलवेज ऑन द फ्रंट फुट फॉर दोज फैमिलीज. रहा सवाल जहाँ तक ये वाक़ात हमारे सोसाइटी में पेश आते हैं, इनके लिए भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है. दे आर वर्किंग फॉर दैट, एंड वी हैव hope on our security agencies. They will sort out these things, and one day we will have our peaceful society, and we should have a trust, we should have a faith on our country, on the strength of our country, on the strength of our security forces. That is it.